Hello, dear friends, you are at MU's. Learning English has always been considered a source of fun, entertainment, and amusement. Yes, definitely, the word amuse stands here for the same fun and entertainment that we derive while learning English. But it also says Amrita makes you speak English. Friends, I am Amrita, and teaching English, making English easy for the learners is my passion. And you here stands for all those people who have great interest in learning English. Well, speaking English has been a dream of many of our native learners we know. It is not like they do not know the language, they know it. They can read and understand, they can listen and understand. Even they find themselves okay at writing too. ऐसा नहीं है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। उन्हें इंग्लिश आती है, वो सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, यहाँ तक कि लिख भी लेते हैं। बट द प्रॉब्लम arises when it comes to speaking. There can be many reasons for that. We are not going to discuss those. Presently, I just want to tell you that no remedy is as effective as practice if someone wants to become comfortable in speaking English. It is a game of, yes, it is a game of training our mind to think in English and to speak in English. This is a practice video for you. Go with the complete video and check if this practice way is helpful to you. I must tell you that how we are going to practice. Listen, I believe that जो भी हम सोचते हैं सभी आइडियाज़ हमारे माइंड में हमारी अपनी लैंग्वेज में आते हैं and generally we say things all those things in our mother tongue, in our first language. But if we try to say the same thoughts in English, it will give us a good practice, and eventually a learner will not only get the habit of speaking English but also improves his spoken skills. ऐसा है कि जो भी थॉट हमारे माइंड में आता है अगर हम उसे इंग्लिश में कहने की कोशिश करें तो एक हैबिट बनेगी और इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा। ऐसा ही कुछ प्रैक्टिस हम यहाँ करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू थॉट एंड द थॉट विल कम ऑन द स्क्रीन इन हिंदी। यू विल गेट अ लिटल टाइम इन बिटवीन और आपको उस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना है। This is just a oral practice, and if you will do it honestly, I believe you will enjoy it. So check the practice way for yourself and your English too. I hope you are ready. So here comes the first sentence for you. प्रभु आप महान हैं। इसका इंग्लिश बोलिए। Good. God, you are great. ईश्वर इस विश्व के रचयिता हैं। Don't say that Hindi is difficult. Rachayita, otherwise Rachayita means creator. God is the creator of this universe. हम अपने देश से प्यार करते हैं। We love our country. छोटे बच्चे बहुत जिद करते हैं। This may not be true with all the children, but yes, sometimes children. Oh my god. I was going to give you the English. Yes, sometimes small children insist a lot. जिद करना means insist. सकारात्मक सोचो। Think positive. एक अच्छे इंसान बनो। I hope
आप इसका इंग्लिश बना पा रहे हैं? बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. Friends, these are the small simple sentences that I have taken, and ये सिर्फ इसलिए आपको बताने के लिए कि आप कैसे बहुत सा प्रैक्टिस कर सकते हैं with the help of my videos like this. So see if you are finding the way helpful. तुम्हारा फ़ोन बज रहा है. Your phone is ringing. मुझे नींद आ रही है. मुझे नींद आ रही है. I am feeling sleepy. अपनी सेहत का ध्यान रखो. Yes, good. Take care of your health. दिन में 10 गिलास पानी पियो. I believe it is also very important if one wants to enjoy good health. So, दिन में 10 गिलास पानी पियो. Take 10 glasses of water a day. घास पर नंगे पांव चलो. घास पर नंगे पांव चलो. Walk bare feet on the grass. चौकड़ी लगाकर बैठो. Life has gone, very sedentary, and most of the people are working on their tables and chairs. So generally हम बच्चों लोग को बोलते हैं कि चौकड़ी लगाकर बैठो. So what is the English of it? Sit with your legs crossed. Good. If you could say it in English, that is very nice. मछलियाँ घास नहीं खाती हैं. मछलियाँ घास नहीं खाती हैं. I want some sentences like this because it will invite even little children to make practice of spoken English. The fish do not eat grass. The fish do not eat grass. सूरज पश्चिम में छिप गया है. East and west. The sun has set in the west. East or west, this practice way is best. Oh wow, good. अपनी बगिया को फूलों से सुंदर बनाओ. बगिया means garden. Make your garden beautiful with flowers. कुदरत का अपना संगीत है. And I think that is very true. Nature has its own music. Listen chirping of birds, rustling of leaves. All these make beautiful music of nature. फूलों से बातें करो. और मैं तो बोलूँगी कि फूलों से इंग्लिश में बातें करो. Talk with flowers and talk with flowers in English. कुदरत के संगीत का आनंद लो. आनंद लो. If enjoyment word is coming in your mind, you will say it fast. Enjoy the music of nature. मुझे तारों भरी रात पसंद है. Spoken English is a game of good vocab. Most of the people I have seen
इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द वर्ड्स फॉर डेली यूज. So this practice is going to help you people a lot. I love the star-studded night. Star-studded night, तारों भरी रात. समय के मूल्य को समझो. Understand the value of time. अपने देश की एकता के लिए काम करो. अपने देश की एकता के लिए काम करो. Yes, good. Work for the unity of your nation. दूसरों के आदर्शों को जीवन में ग्रहण करो. I think I should give you little time for this sentence. दूसरों के आदर्शों को जीवन में ग्रहण करो. If you know the English of ग्रहण करना, आदर्श, then definitely you can say the complete sentence in English. Imbibe the principles of others in your life. Imbibe principles. These are the two beautiful words in this sentence. Any word that you find good for you, I will suggest to take it down in your notebook. तुम्हारी मुस्कुराहट दिलकश है. उसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा गया. Friends, I am not going to give you the English of these two sentences, and why I am not going to give you अभी पता चलेगा. So hope you enjoyed the session. क्या आपको ये प्रैक्टिस का ढंग अच्छा लगा? क्या आप सभी वाक्यों को इंग्लिश में बना सके? क्या ज़रूरी शब्द समय पर दिमाग में आए, या समय लगा, या कुछ नया सीखने को मिला? ये सभी क्वेश्चन आपने अपने से करने हैं, अपने को आंसर देना है. And now it is time to take homework. Little homework, and don't get scared. I just want to tell you that repeat and practice this session if your first attempt was not very satisfactory. अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा नहीं रहा, अगर आप सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाए, तो इस वीडियो को एक बारी ज़रूर रिपीट कीजिए. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द होमवर्क फॉर यू. तुम्हारी मुस्कुराहट दिलकश है, उसे उस शिक्षा के लिए विदेश भेजा गया. Write in the comment box the English translation of these two sentences. इन दोनों sentences का translation आप inbox करिए, comment box में डालिए, and I would love to see it. And now, yes friends, like, subscribe, comment and share. If you found this practice way quite helpful for you, अगर आपको प्रैक्टिस का ये ढंग अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा. एंड नाउ इट इज़ डन फॉर टुडे. I will see you in the next video with the answer of those two sentences that I have given you for homework. So till then, take care. Bye bye.